अब challenges in NLP की बात की जाए तो there are number of challenges of natural language processing because natural language is ever evolving and always somewhat ambiguous. The major challenges around NLP that one must be aware of are as follows. Language difference. India, even in India, when we talk about India, there are 28 plus or mainly 14 plus languages are there. और ग्राउंडेड लेवल पे बात करें तो पता नहीं आज तक जुड़ भी नहीं पाए हैं और ये तो कंटिन्यूस वे में बोलेंगे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. So different languages have not only different sets of vocabulary but also different types of parsing, different modes of inflection and different cultural norms और phonics जो उसका एसेंट रहता है, ग्रामेटिकल रहता है, लिखने का बोलने का जो एसेंट रहता है. So you can resolve this issue with the help of universal models that can move at least one part of what you have learned to other languages. However, you have to spend time updating your NLP system for each additional language. जैसे जैसे लैंग्वेज बढ़ती जाएंगी उसकी एक्यूरेसी आप बढ़ाते जाओगी. जो नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है और नया एसेंट है उसको ट्रेन करते जाओ. ये ट्रेनिंग फेज का काम है. Training data NLP is all about adjusting language to better understanding it. For a person to be proficient, it is essential to spend a substantial amount of time listening, reading and understanding it. जो NLP है वो बेसिकली चार चीज़ें यूज़ कर रही है: listening, writing, reading एंड अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं. स्पीकिंग तो करती नहीं है लेकिन वो करती है उसकी जगह जनरेशन. तो हम बोल सकते हैं कि एल लिसनिंग, लर्निंग या फिर लर्निंग बोल सकते हैं, रीडिंग बोल सकते हैं. स्पीकिंग की जगह जनरेशन कर रही है वो. ये LSRW जो है स्पीकिंग इंग्लिश के वो हैं मेजर पिलर्स. The training data given the NLP system determines its capability. If you feed the system bad or questionable data, it's going to learn the wrong things or learn in an inefficient way. Training data is the essential training point. ये ट्रेनिंग डेटा को ट्रेन करने की प्रोसेस बताई गई है. कितना अच्छा अगर आप उसको ट्रेन करोगे. जो बेसिकली जो AIML के जितने मॉडल्स है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स में भी यही बताया गया है. जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा. जितने आप उस पर फिल्टर्स लगाओगे उतना अच्छा आपको मोस्ट एफिशिएंट रिलेवेंट डेटा मिलेगा rather than the whole bulky stuff. Development time. You also need to think about the development time for an NLP system. The total time taken to develop an NLP system is higher क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तगड़ी वाली लगती है इसमें और भी चीज़ें लगती हैं क्योंकि NLP is that type of system which are based on the R&D section and the output generated by this NLP system should be taken as a accurate one. तभी तो इतना खर्चा कर रहे हैं ना. अगर वो एक्यूरेट ही नहीं दे पाए तो क्या मतलब फिर. AI जो तो कंप्यूटर भी दे पाता है प्रेडिक्शंस. तो AI evaluates the data points to process them and use them accordingly. With a shared deep network and many GPUs working together, the training time can be reduced by a few hours. The pre-existing technologies can help to developing the product from scratch. अब जो ChatGPT बार्ड है ये सब करके चीज़ें हैं. जेमिनी भी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. वो डेवलपमेंट टाइम में डेवलपमेंट फेज में NLP के अंदर by using deep network and many GPUs working together to form a NLP system. Parsing ambiguities. Many times it's harder even for another human being to parse out what someone means when they say something ambiguous. अब जो आपने स्पीक बोला है उसको सही में नहीं बोलोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं बोलोगे, कुछ भी बोल दोगे, मिसमैच रहेगा या फिर जो मिसिंग रहेगी इन्फॉर्मेशन उसके साथ आप बोलोगे तो वो आपका इफेक्ट करेगी आपकी आउटपुट पे. आपने बोला एमिली है और चाहोगे आम तो कैसे काम चलेगा.
for their words. In order to resolve this, an NLP user must be able to see contexts that can help it understand the parsing, and it also maybe need to ask the user for clarity. बार बार पूछे कि ये सही है, ये सही है, ग्रामेटिकली जैसे वो शो करे। ग्रामेटिकली एक्सटेंशन है वो बहुत बढ़िया है, और वो फीडबैक बेस्ड लर्निंग यूज करता है। जैसे जैसे आप उसको बताते जाओगे वो एक मेमोरी में यूज करके रख ले जाएगा कि यूजर ने एक्सेप्ट किया, ये डिसमिस किया, इस टाइप ऑफ चीज। एंड मिस स्पेलिंग, it is a common mistake by human. Spelling mistake can be easily interpreted by the human being. उसमें NLP के साथ एडिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के साथ होता तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। NLP भी एक सिस्टम है जो कि आपको एक इनपुट के थ्रू आप कंफर्म करेगा, उसके बाद वो पूरा जनरेशन अपना होल प्रोसेस जो भी टाइम टेकन भी हो सकता है, उसमें एक गलत इनपुट के द्वारा पूरी प्रोसेस बिगड़ जाएगी। वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स, ये वही बात है कि एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होना। नो लैंग्वेज इज परफेक्ट एंड मोस्ट लैंग्वेज हैव वर्ड्स दैट कैन have multiple meanings depending on the situation. For example, a user who asks how are you has a total different name than a user who asks something like how do I add a new debit card. Good NLP tools should be able to discriminate between these trends with the help of context. जो context रहता है वो syntax रहता है, जो बोला गया है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाली चीजें। और कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे कि हमारे यहाँ नए मेहमान आए, उनको उनको पुरानी लैंग्वेज हमारी यहाँ के रहने सहने के बारे में मालूम नहीं होगा, उतने अच्छे से ढलेंगे ना वो, तो उसी हिसाब से NLP है। अब उसको नई चीजें तुमने बता दी, नए मेहमान की तरह वो आया आपके लैंग्वेज को सीखने, आपके लैंग्वेज में चीजें ही अलग हो गई, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा। Then phrases with multiple intentions. Some words and question actually have multiple meanings. Yeah, why not? Go, went, gone, eat, ate. Then can का भी देखा हमने। देन उसके बाद रहता है गेट का, रहता है सेट का, रहता है लेट का, रहता है करने दो वाली चीजें। फॉर एग्जाम्पल यूजर में से टू योर चैटबॉट विद सम टाइम लाइक आई नीड टू कैंसिल माय प्रीवियस ऑर्डर एंड अपडेट माय कार्ड ऑन फाइल। योर AI needs to be able to distinguish this intention separately. False and false positives and uncertainty. A false positive occurs when NLP notice a word that should be intelligible or addressable but cannot be sufficiently answered. The idea has developed an NLP system that can recognize its own limitation and use the question to clear up ambiguity. False positives और uncertainty नहीं होना चाहिए, जो लिमिटेशन सेट है उसको क्रॉस भी ना करे, लेकिन एक एक्यूरेट इनपुट प्रोड्यूस करे for the better output. Keeping a conversation moving. Many current NLP applications are built on communication between a human and a machine. Chatbots type according to NLP AI model to be able to keep the conversation moving, providing more questions to collect more information or data, and always pointing towards a solution. These are some 9 points keeping a conversation moving between the user and the system. And false positive and uncertainty, phrases and with multiple intentions, word with multiple meaning, misspellings, phrasing and ambiguities, development time, training data, language difference. These are the challenges of NLP. Hope you like this. If you like this, subscribe my channel Codekar, always present for you except night